हेलो एंड वेलकम टू द एनेस्थीसिया रेजिडेंसी सीरीज़, जिसमें कि अभी हम सीख रहे हैं दैट हाउ टू बिगिन द एनेस्थीसिया रेजिडेंसी. सो आई ऑलरेडी मेंशन इन द प्रीवियस 2 वीडियोस दैट व्हाट आर द इनिशियल थिंग्स दैट यू नीड टू डू. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू द मॉनिटरिंग, है ना. बिकॉज मॉनिटरिंग इज़ द फर्स्ट थिंग दैट विल बी टॉट टू यू वंस यू एंटर इन योर रेजिडेंसी. एंड उसमें जो सबसे पहली चीज़ हम कनेक्ट करते हैं एज सून एज द पेशेंट अराइव्स on the OT table, and as soon as you see the patient, the first reflex that comes is to connect the IV fluid. कहाँ कनेक्ट करेंगे हम? कैनुला में कनेक्ट करेंगे. मैम ये कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम? तो IV fluid को क्यों कनेक्ट करना है हम कैनुला में? क्यों कर रहे हैं हम ये? पेशेंट NBM है. पेशेंट का हम ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉनिटरिंग स्टफ, है ना. तो पेशेंट NBM है. पेशेंट का जो है उसने खाना पीना नहीं खाया है एंड वी आर गोइंग टू गिव हिम सम प्री लोडिंग. ओके, हम उसको कुछ प्री लोडिंग करेंगे, थोड़ा सा फ्लूइड देंगे बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ एनेस्थीसिया, बी इट जनरल एनेस्थीसिया, मतलब बी IV एनेस्थेटिक एजेंट्स और अ रीजनल एनेस्थीसिया प्रैक्टिस व्हाटएवर. सो उसके लिए क्या करोगे तुम? मॉनिटरिंग में सबसे पहले फ्लूइड लगाओगे. अब फ्लूइड नहीं चल रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा है? सो मे बी यू नॉट स्विच्ड ऑन द रिंगर ऑफ दैट द रेगुलेटर ऑफ द IV fluid, or the other thing is you have not checked that if it is working or not. Okay, so you are like, okay ma'am, we'll try to flush the cannula. ठीक है, आपने कैनुला फ्लश करा तो वो चलने लग गया. अब once you start doing this on a regular basis, you know very well which cannula is working and which cannula is about to not to work in the near future. If a patient winces a lot with pain, if you notice a visible swelling that is happening while you're trying to flush the cannula, while the fluid is being infused, although the flow rate that you're seeing in the chamber is quite nice, but you're seeing the patient is in a lot of pain and you're noticing a swelling, do not ignore it. Okay, क्यों करना है हमें ऐसा? Why am I so bothered to talk about this today? Because if we learn and if we train ourselves to avoid these small little complications, then the longer cascade of the complication can be avoided. Complications in anesthesia, from my perspective, looks like a nuclear reaction to me. If it's not existing, it's not existing, and you are at peace. The reels that we see that the anesthesia people are quite relaxed. Why are they relaxed? Because they're not letting those complications happening. If at all the complications start happening, then there is a cascade of complication that continues. You enter into a vicious cycle of complications, because then you treat a complication, then you treat the complication of the complication, and then you are just anxious and worried, and it's not a good sign. तो इसको सही करने का क्या रास्ता है? हम समझ रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन है मैम और कैसे हम इसको सही करें, लेकिन इसको सही करने का यही रास्ता है, टू प्रिवेंट इट, है ना. The one way to learn is to do it, to perform it, and to know that it's a mistake and I'll not do it again. The other way is to observe somebody doing a mistake and learn from their perspective. The third thing is, if someone is sharing their experiences with you, you can learn from them as well. So there are various ways to learn, and especially this is for the newer ones who are joining anesthesia, how to learn in that OT atmosphere, है ना. वहाँ पर कैसे सीख सकते हो आप? वहाँ पे आप ऑब्जर्व करके सीख सकते हो, आप काम करके खुद सीख सकते हो. यू विल बी टॉट बाय योर सीनियर्स, you'll be theoretically also you'll be studying. There are various methods of learning. Now what happens is, I've seen many a times that senior will be asking you to do the case, to apply the monitoring fast and to do the work very fast, because obviously you have to be very swift in your work. You just can't be very slow, because there is an OT time that is running, there is a timer that is on, and also the staff, the surgeon, the paramedics, everybody is dependent on your steps. Basically it's a teamwork. OT में जो भी हो रहा है ना,
वो टीम वर्क होता है। और अगर कुछ भी डिले हो रहा है ओटी में तो वो पूरी टीम में से कोई भी एक, अगर इफ a single part is a little malfunctioning, and the whole cycle gets delayed. तो बेसिकली आपको सब बोल रहे होंगे जल्दी करो केस हैंडल करो, क्या करे हो, एंड देन यू आर लाइक या एंड यू जस्ट अफ्रेड एंड यू आर स्टन्ड एंड यू लाइक ओके फाइन, and you just forget about that cannula and the pain that was causing the patient that was wincing. You just okay, we'll just let it be. It's a matter of a few minutes, and then the spine will be given to the patient, and then she'll be fine. You just think that ways, and you go. बस यहीं पे गलती हो गई, यहीं पे गलती हो गई. See, nobody is going to scold you for saying कि मैम सर ये कैनला नहीं चल रहा है, या तो तुम खुद कोशिश कर लो, तुमसे नहीं हो रहा है, यू जस्ट अफ्रेड एंड यू गो, यू जस्ट इग्नोर. अगर तुमसे डर लग रहा है, तुमसे नहीं हो रहा है, यू जस्ट आस्क अ सीनियर, ओके, और आस्क द फैकल्टी. इट्स ओके टू बी कंफर्टेबल, ओके. They'll change the cannula. Please apply a new cannula to the patient, and only then ensure that it is working. Ensure that your cannula is working properly. Appropriate size of the cannula for the appropriate age of the patient, with the appropriate condition of the patient medically. Assure these things and you are good to go. The very important thing of the monitoring is cannula. तो अप्लाई कर रहे हो और उसको तुम चेक कर रहे हो. मैं कैनला लगाना नहीं सिखा रही हूँ, मैं मेथड्स नहीं सिखा रही हूँ. मेथड्स के लिए तो यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज़. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एडवाइस दैट हाउ टू सेव योर सेल्फ. आपको ओटी में बहुत लोगों को बचाना है. आपको ओटी में सिर्फ पेशेंट को नहीं बचाना है, आपको ओटी में अपने आप को भी बचाना है. तो कैसे बचाओगे अपने आप को? यही छोटी छोटी गलतियाँ जो है उसको इम्प्रूव करके. And as a student, as a learner, as a trainee, our job is to improve the lacunas that are happening, है ना? This is a everyday thing. Every day you'll be committing hundreds of mistakes, and every day you'll be correcting hundreds of things. You will be learning every day. There is an overload of knowledge that is going to happen in PG life. Mind it. You will not be able to realize what and all you're going to learn. These things sound very simple and you're like, what is she just talking about? But believe me, these things make a lot of difference. तो मैं पहली चीज़ यही सिखाऊंगी किसी को कि कैनला चेक कर लो भाई. चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं चल रहा है तो प्लीज़ बता दो या लगा दो, है ना. मैंने खुद ही करी है ये गलतियाँ. आई हैव सीन इन माई इनिशियल डेज, आई हैव डन इट and I have realized that what happens. You know what happens? क्योंकि आपको तो डर लग रहा है, लगता है डर, बिल्कुल. जूनियर जो है ना, फर्स्ट ईयर, उसको डर लगता है. अब क्या है कि आप तो चले गए, पेशेंट तो प्रीलोड हुआ नहीं, पेशेंट को हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा दिया. नाउ द बीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. द बीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, द परफ्यूजन ऑफ द ऑर्गन्स is going to decrease. Okay, fine. Now you will give some vasopressors, now you will push some fluid, now you will start monitoring. Now there is no pulse, the pulse becomes feeble, and then you're like, now what to do, what next, what can I do next? Then you might inject some other vasopressor. अब उस vasopressor से ब्रैडिकार्डिया होगा, कुछ और होने लग जाएगा, फिर ब्रैडिकार्डिया का ट्रीटमेंट करोगे तुम. तो अब ये जो साइकिल हो गई ना स्टार्ट, ये बहुत ख़राब साइकिल है. इसमें फंसने से अच्छा है कि तुम निकल जाओ. A calm anesthetist will spread a lot of positivity and calmness in the OT. Okay, the surgeon, the patient, the nursing staff, the paramedics, everybody remains calm if the anesthetist is calm. उनको पता है कि ये ठीक है, ये खुश है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, then everything is fine. If an anesthetist is in tension, it is a very big thing. Okay, so I hope you understand the importance of these things, and I'll keep sharing this little bit of advices and insights from my end. Thank you and have a nice day.